He comes from a lineage of great sages, yogis, and saints from India. He began his spiritual journey at the age of 7 and was fully realized by the age of 14. During this time, he delved into different practices and acquired mastery over Tantra, Mantra, Yantra, Aghori practices, and Yaksha sadhana. He was a siddha, and many masters, saints, and sages used to visit him in solitude to gain wisdom and guidance from him since the tender age. Although he has been helping humanity since childhood, he never disclosed this part of him to the world, and only the advanced yogis and masters were aware of his divine presence. Only in the last 2 years he chose few people from the world and started guiding them in their spiritual paths, and those who have been closely associated with him have witnessed many miracles in his presence. Despite being a family person, he is a yogi and intends to help people entangled in this world achieve Jivan Mukti, liberation while being alive. He is truly in the world but not of the world, and if you really want to understand him, look him beyond his physical appearance and just sit with him, and you will never be the same again. In his presence you will transcend your body and mind and experience the state of Sat, absolute truth, Chit, pure consciousness, Ananda, eternal bliss. Let us fold our hands in front of his divinity and with a heart filled with gratitude and love welcome our spiritual guru, the realized soul, and our enlightened master, Guru Meenakshi Mishra. ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अहं ब्रह्मास्मि। So good morning everyone and good evening to the people from the other side. So after the intense things that you did over Dusshera and the sadhanas that you continued, I thought to give you a break. So that's why I came up with this 15 days of new challenge for you. Because it is said intense work is rest. When you do intense work, you don't find time to rest, but that work itself becomes your rest. So some benevolence was there. So I said, okay, so let's give them intense work so that that becomes the rest for these people. Because there is a saying, no, like neither saying it is actually reality. The reality says that only the rich can do sadhana or can walk on the path of spirituality. And when I say only the rich can walk on the path of spirituality, what does that exactly means? It does not mean with money, but you should be rich with your dedication, devotion, shraddha, bhakti. So you should be fulfilled with all of it. Because we all know like it's a luxury that many cannot afford. And only the rich can afford it. So in order to see like how rich we are, we will continue doing the sadhana. Because it is not just a
luxury for us. And look at it, like when the world runs for the materialistic thing, they do all the kind of things that they want to. They do with their work, they do the jobs, business, whatever they do. They do it for the worldly things. But you are doing this to find God, to achieve God. तो बताओ धनी कौन? Who is rich here? And that's where I say you have started on a journey which is so rich in nature that you are no more satisfied with the worldly things. You need the ultimate. And that's where I see that richness comes into us. कोई गरीब भक्त हो ही नहीं सकता. गरीब, कौन गरीब? जो सिर्फ संसार में पड़ा है. अमीर कौन? भले ही संसार में गरीब दिखे लेकिन भक्ति में भरा हुआ है. सो व्हेन आई टॉक अबाउट दिस, मैंने सोचा कि अगर फिर भी कोई गरीब रह गया है तो उसको अमीर बना देते हैं. सो लेट्स डू दोज थिंग्स फॉर दोज 15 डेज. बड़ा हल्का फुल्का, मतलब बारिश के मौसम में बैठ के पकौड़ी खाने जैसा है. So people say you also do this. I said, yeah, why not? Why should you only have only one way of going, knowing God? Then I said, किसी ने कल मुझे पूछा, when I Hari Bhai posted this, somebody called me and asked me, ये क्या होता है? Diwali starts on Dusshera. Mela, for that you have to wait for a few more hours, be there, then listen to it. And they were asking like, what will exactly these things do to us? ये सारी चीजें हमको कैसे काम में आएगी? अब हम तो संसार में हैं. आप कितना भी कोशिश कर लो, हम वहीं चले जाते हैं वापस. And you keep on coming back again and again, and we continue to go back again and again. I said, वो आपका नेचर है, ये मेरा नेचर है. So you continue to go there, I continue to come here. But they say, is there really a way through which it can be attained? Because I don't see myself walking on the path correctly. I don't see myself to be there always, because might be when I'm listening, even while listening also I run away somewhere. Then I come back to question whether I was there or I was sleeping. So can this really help me? Then while talking, I said, are you willing to? क्या आप चाहते हो कि आपके साथ? बोला, नो, चाहते तो हैं लेकिन मन कभी इधर कभी उधर भाग जाता है. सो इट कीप्स ऑन रनिंग हियर एंड देयर, राइट? फिर कहते हैं कि हमारे जैसे अधम की कोई गति हो सकती है? मीन्स द वे यार, ना पूजा सही से कर पा रहा हूं, ना ध्यान सही से लग पा रहा है. क्या is it even possible for me to get to that space? In that moment, I said, whether even you are able to do some things internally or not, keep on doing the practices, whatever is shown in the outer world. बोले इससे क्या होगा? सब कहते हैं मन में अगर भक्ति नहीं है तो कोई पूजा काम में नहीं आती. सो भक्ति तो होना चाहिए, लेकिन मैं भक्ति तो करना चाहता हूं, लेकिन तभी खाना गर्म हो जाता है, भूख लग जाती है लोगों को. सो व्हाट शुड आई डू? कोई ना कोई सांसारिक काम आ जाता है, कार्य आ जाता है. सो क्या करना चाहिए ऐसे? बोला कुछ नहीं. बोला फिर कुछ नहीं तो कैसे होगा? देन आई सेड, वॉट एवर वे इट इज बीइंग डन, are you connected or not is the question. Connected in the sense, not completely 24/7, but are you still hooked around it? तो बोले कैसे समझें हम? सो आई गेव द एग्जाम्पल विच कम्स फ्रॉम आवर लिटरेचर, लाइक फ्रॉम आवर पुराणास इटसेल्फ. इतना सुंदर व्याख्या है उसकी. इट सेज दैट
देयर वॉज ए स्मॉल लिटिल एंट, एक छोटी सी चींटी है, ठीक। एंड द ant wants to go to a place where there is a heap of sugar. चींटी कहाँ जाएगी? जहां शक्कर है, एक उसको पता चला कि एक शक्कर का ढेर है और वो वहां जाना चाहता है। लेकिन चलते चलते क्या होता है, while he is walking, unknowingly he climbs on the mountain on a elephant. जाने अनजाने चलते चलते हाथी के ऊपर चढ़ जाता है, और हाथी मंदिर के तरफ जा रहा है। चींटी को जाना कहाँ है? वो गुड़ के पास, शक्कर के पास, टुवर्ड्स दैट जैगरी और शुगर। इट वांट्स टू गो देयर। उसके मन में इच्छा यह है कि मैं भी भक्ति करूं, मैं भी भगवान का नाम लूं, लेकिन शुगर को नहीं छोड़ पाता। बट व्हेन द एंट wants to do bhakti and wants to do the worship, but is always allured towards the sugar, it was running towards that. But then there was this elephant. Unknowingly, the ant climbed on the elephant. And the ant is walking, the elephant is also walking. Where will the ant reach? चींटी कहाँ पहुंचेगा बताओ? Because the one ant is continuing to walk on the elephant itself, and the elephant is walking towards the temple. कि चींटी का मन तो है मैं पूजा ध्यान सब करूं, लेकिन उसका जो संसार के प्रति मोह है वो छूट नहीं पाता, वो संसार की तरफ भागता है। लेकिन उसी समय वो एक हाथी के साथ जुड़ जाता है और वो हाथी मंदिर की तरफ जाता है। चींटी कितनी भी कोशिश कर ले, अब मंदिर ही पहुंचेगा। आपने देखा होगा ना कि व्हेन पीपल ट्रैवल इन ट्रेन, ट्रेन इज गोइंग ऑन एंड पीपल वॉक इन दैट, एक बग्गी से दूसरे बग्गी, तीसरे बग्गी, शुरुआत से लेके आखिर तक चल जाते हैं। कितना भी चल लो, ट्रेन जहां पहुंचेगा आप वहीं पहुंचोगे। मेक सेंस? व्हाट डज दैट मीन? It means very simple. If you have gotten onto the train, whether you're walking here, there, everywhere, the train will carry you to the destination only. Whether even you're walking on the opposite direction or the same direction. Up until when? Up until you get down from the train midway. तो क्योंकि हम हफ्ते में कभी कभी मिडवे उतर जाते थे, हमने कहा कि अभी 15 दिन की साधना दे देते, 15 days of sadhana. Very simple ones, very easier ones. So दोनों चीजें प्रूव हो जाएंगी. So while doing this sadhana, even if the ant runs towards the sugar, మా నిన్ను పిలుస్తున్నాడు, నువ్వు will పట్టించుకోలే. it will still be on the elephant walking through. And at the same time, we will also, being connected to that space, we will reach out to that, जिसे हम luxury कहते हैं ना, let us attain to that luxury. क्योंकि दीपावली किसकी साधना की है? धन की। और धन और वैभव सिर्फ एक तरीके का नहीं हो सकता। तो धन और वैभव दिव्यता भी हो सकती है, लेकिन दिव्यता आपके अंदर आती क्यों नहीं है? What stops all that? That's the question. बोला ऐसा क्या है जो मुझे संसार की तरफ लगा के रखता है? ऐसा क्या है कि जो मेरा ध्यान हमेशा बांट लेता है? I want to focus completely towards this, but somehow part of it is taken and going there. So when I was thinking of it, like how to bring this into practice, I sat down and designed a very simple step. बड़ा हल्का फुल्का है। मैं क्यों बोल रहा हूँ हल्का फुल्का है? Because it won't take 5 minutes of your time every day. But in order to give that 5 minutes, you should have a commitment to do that.
And that's where I started, like, so that is, Aditi ji, that is a question for Q&A session. You can ask me, the संसार भी तो भगवान का ही कार्य, पूछना, बता दूंगा. Can you see? हम कहते तो संसार भगवान का ही कार्य है, मानते नहीं है. मैं क्यों माया में फंस गया, मैं फिर क्यों ये कर दिया, फिर रोते क्यों है हम अगर भगवान का है तो. Can you see? We are that half baked पनीर, ना खाने को होते ना फेंकने को. That's the condition that we are in. But that's a good question you can ask in the Q&A session. Obviously, I will answer that because I want to continue with this today. Okay. So this 15 days के जो साधना था, so in that very moment I was realizing that we just have completed the Shakti sadhana, or this is just the Dusshera has gone right now. So मैंने देखा कि दशहरा और दिवाली के बीच में जो 15 से 17 दिन का समय होता है, this 15-17 days, I said, why this cannot be a great opportunity to continue the sadhana, wherein the Devi has already dispelled some darkness. Yet if something is there, we still clean it up before Diwali, so that we are abundant in the space when we started doing the puja of Diwali. So वहां से छोटा सा विचार उठा और वहां से ये आज का सेशन है. But I know this session is not up to the mark of the level that you people are. क्योंकि आप इतने तगड़े सेशन सुन चुके हो कि ये सेशन शायद आपको लगे ये क्या था. Let's see. But the intensity of this session is not in the talk today. It is in the action that you will take. अच्छा, बिना जाने, बिना सुने, बिना समझे कितने लोग ये 15 दिन करने वाले हो? And if you raise your hand, I will take it as a promise from you, and that's what you have committed to your own self, and you will do that. Very good. बढ़िया है, भलाई आप ही की है. This is the way how the ant will climb onto the elephant, I believe. So good, you are ready. So let me begin in my own classic way of telling you a story. कहानी से शुरू करते हैं, सो समझना आसान हो जाता है, चलना और आसान हो जाता है क्योंकि याद रह जाता है. सो कहानी कुछ ऐसी होती है कि देयर वाज ए टीचर एंड ए स्टूडेंट. ओके, एक बार it was like, okay, so let me speak in English first, then I will move to Hindi also. So one evening, just after Dusshera was over, there was this young student or disciple who goes to the Guru and he asks, Gurudev, yesterday I saw that people were burning Ravana. But every year we burn him and every year he comes back again. Why does Ravana never die? ये हर साल क्यों होता है? हर साल जला देते हैं, वो हर साल वापस आ जाता है. Why is it so? The student was not able to, and he was asking this question to the Guru. Then the Guru, looking at the small little child, smiles and says, oh dear child, you should know that Ravana never only lived in Lanka. He lives within you. Then the student with wide eyes, he says, within me? The Guru says, yes. He has
10 heads. But his 10 heads are not made of paper or wood. They are all the 10 enemies you carry. तुम्हारे अंदर वो 10 विकार हैं. Those are the anger, the ego, the greed, the jealousy, the attachment, the lust, the arrogance, the hatred, the laziness, and the envy. Then the Guru says, can you tell me one thing? When you get angry, does Ravana rise within you? When pride enters your heart, does his head not smile? Now the student with his little knowledge also was able to grasp that, and he just lowered his eyes with realization. And in that moment, he said, then Gurudev, how can I kill this Ravana inside? To this, the Guru says, अगर हर साल रावण आता है तो हर साल राम भी तो आते हैं. If every year Ravana comes, every year Ram also shows up. He says, then how can I bring that Ram within me? Then the Guru says, by you can only kill the Ravana within you by awakening the Ram within you. Because Ram lives in a heart as compassion, humility, love, patience, truth. And each time you choose forgiveness over anger, Ram wins. Each time you choose humility over ego, Ram wins. Each time when you awaken, once you awaken that inner Ram within you, the Ravana has to go. By just listening to this, the child eyes lit up with glow, as if a lamp has been placed not outside but within his heart. And then the Guru says, and remember, my child, Dusshera is just only the beginning. Because the next 15 days are your preparation. Burn a Ravana head every day and light a new diya of virtue and knowledge within you. So that by the time Diwali arrives, your heart will be brighter than 1,000 lamps. And this is why I come up with this process where you will not light a diya outside. You will burn down one head of Ravana every single day, and then you will be lighted up by the time Diwali comes. Now the question comes, रावण के तो 10 सर थे, आपने 15 कहाँ से लाए? I said, रावण के तो 10 थे, हमारे पास जो रावण है उसके 15 हो चुके हैं. या तो गिने तो और ज्यादा भी हो सकते हैं. We keep on growing it. Thank God we have not multiplied that. Or else I don't know for how many days this sadhana would have gone. So considering these 15 days, we have come up with one head of Ravan every single day. I will help you what to do, how to do that. But are you willing to do the sadhana is the question. Whether you will or not, you are on the elephant anyways. It will push you, pull you. Anyways, you will have to go. Does not matter how far you run, you cannot overcome him. Because a million steps of an ant would be 2 steps of an elephant. तो आप चाहे कितना भी भागने की कोशिश करो, क्योंकि जुड़ चुके हो तो चलोगे ही चलोगे. And there is no other way. If you thought you will overcome that, let's see. But then begin this journey of these 15 days. The question here is, if Ravan had all those heads,
which head troubles you the most? And at the same time, which light you will burn on that day that will help you to overcome that. So we all know, like when we celebrated Vijayadashami या तो दशहरा जिसे हम कहते हैं, it marked a victory of dharma over adharma, truth over falsehood, right? Humility over arrogance. But when Ravana's idol or effigy जिसे कहते हो, when we when it burns, it is not just the end of the story. It is actually a symbolic burning of all that binds, जो सारे चीजें हमें बांध देती है ना, all the things that bind the soul to ignorance. It is just an example of that. But as I said, the journey should not stop with the burning of the Ravana on Dashera. But between Vijayadashami and Deepavali, there are these 15 sacred days, which can be a bridge between from the destruction to illumination, from cleansing to inviting the divine grace into our lives. जैसे आप देखे होंगे कि दिवाली आता है तो कई सारे घरों में साफ सफाई होना शुरू हो जाता है, राइट? सो यू स्टार्ट डूइंग ऑल दी क्लीनिंग एंड ऑल दैट इज डन, पूरा घर साफ कर देते हो. बट दिस टाइम we will also add this to that. This time we will not only cleanse our houses, we will not only clean those up, but we will also clean our mind and heart. These 15 days are a good time for a sadhana as well. जैसे जप, ध्यान, साइलेंस, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये सारे चीजें किया जा सकता है. ए टाइम फॉर चैरिटी एंड सर्विस, जहां आप दूसरों के लिए कुछ कर पाओ. ए टाइम टू प्रिपेयर आवर इनर सेल्फ to help the goddess Lakshmi to appear, because she is one who never goes into places where there is clutter, negativity and arrogance. शायद आपको पता होगा एक कहानी अष्टवेताल की और लक्ष्मी की. सुना है किसी ने? लक्ष्मी जी और अष्टवेताल की कहानियां अलीवा जी ने सुना है. एक बार क्या है, ऐसी कोई लक्ष्मी पूजा थी और लक्ष्मी पूजा के कारण सब घर में सजावट होती थी, साफ सफाई होता था. एक दिन की बात है जब लक्ष्मी जी सुबह सुबह जाते हैं. ये देखो हमारी मान्यताएं कैसी हैं, मतलब हमें भी लगता है जैसे हम घूमने जाते हैं वो भी जाते होंगे. सो व्हेन वो माना जाता है कि जब लक्ष्मी जी सुबह सवेरे उठ के गए तो देखे कि शहर के सारे लोग सोए पड़े हैं, गहरी निद्रा में है. और एक चंडाल का घर है जहां पे एक लेडी सुबह उठ के साफ सफाई करके सजा के रख के बैठी है और लक्ष्मी उसके घर चले जाते हैं. और ये बात पता चल जाता है बलराम जी को. और जब लक्ष्मी वापस लौट के आती है तो बलराम कहते हैं, जगन्नाथ, ये चंडाल के घर जाके आई है, इसे मंदिर के अंदर प्रवेश निषेध है. जब ये कहा जाता है तो लक्ष्मी आके कहती है, वो तो भक्त का घर था, मैं तो गई, बट वाई शुड आई बी स्टॉप्ड, हमें क्यों रोका जाता है यहाँ अंदर आने से? तो बलराम कहते कोई बात नहीं, यू हैव टू गो आउट, यू आर नो मोर अलाउड, और दरवाजा बंद कर देते हैं. कितना परेशानी की बात होगी नहीं जब आप ये सुनते हो कि जगन्नाथ और बलभद्र भी ऐसा किए होंगे. हाउ अबाउट दे रिमाइंडिंग अस समथिंग, कि कई बार हम भी अपने लक्ष्मी को बाहर रखे दरवाजे बंद कर देते हैं. पर कहानी पूरा सुनो तो लक्ष्मी को क्रोध आ जाता है, वो बाहर रह जाती है, वो उस जगह को त्याग देती है, त्याग के कहीं दूसरी जगह चली जाती है. और उसी रात
अपने अष्ट वेतालों को बुलाती है। जब अष्ट वेतालों को बुलाया जाता है तो अष्ट वेताल क्या करते हैं जानते हो? रात में जाते हैं और लक्ष्मी जी उनको इंस्ट्रक्शंस दे के भेजें कि सारा चीज उठा के लेके आ जाओ। उनके जितने सिंहासन है, रत्न है, मणि है, जो भी है, उनके सारे के सारे उठा लाओ। और बेताल तो बेताल हैं, उनका कोई ताल नहीं है। तो जाते हैं, सारा सामान उठा लाते हैं। लास्ट में देखते हैं कि जगन्नाथ और बलभद्र जो है एक सिंहासन, मतलब एक अच्छे से रत्न जड़ित जो बेड होता है उसके ऊपर, पलंग के ऊपर सोए हैं। तो बोलते हैं लक्ष्मी जी ने तो इंस्ट्रक्शन दिया है कि सारा सामान उठाओ। तो क्या करते हैं, उनको उठा के नीचे सुला देते हैं, खटिया भी ले जाते हैं, सब पलंग भी गायब है। जब जगन्नाथ और बलभद्र सुबह उठते हैं तो देखते हैं, बोले ये क्या हो गया, नीचे कैसे आ गए हम। तो देखा घर में खाने को एक दाना नहीं। 56 भोग खाने वाले हैं हमारे भगवान, बड़े चटोरे हैं, लेकिन खाने को एक दाना नहीं उस दिन। और पता नहीं कितनी भूख लगती है, कितने बार भोग लगता है दिन में, आज कुछ भी नहीं है, खाली बैठे। जगन्नाथ जी बोलने देखा, बोला था उसको मत भगाओ। बलभद्र कुछ मत बोल, विल फाइंड समथिंग, हम कुछ देख लेंगे। ऐसे करते 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 कई सालों तक वो भूखे भटकते हैं। भटकते भटकते फिर जाके आखिरकार वहां पहुंचते हैं एक घर के सामने, क्योंकि वो जहां पे भी जाते, जो कोई भी उनको खाने को देता, उसके घर का खाना खत्म हो जाता। और ये इतने प्रसिद्ध हो गए कि ये दो भाई आते हैं, जिसके घर में जाके खाना पूछते उसका घर का खाना खत्म हो जाता है, सब उसको उनको पीटने लगे देखने से मात्र से। मतलब इतने अलक्ष्मी हो गए कि कहीं पे भी जाए तो लक्ष्मी गायब होने लगी। अंत में एक दिन ढूंढते 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 जाके पहुंचते हैं एक जगह पे, देखते हैं एक भव्य मंदिर है, मतलब भव्य एक प्रसाद बना हुआ है, ए पैलेस काइंड ऑफ ए थिंग। एंड देन दे गो एंड दे से, ओ माय गॉड, इतना बड़ा, अच्छा है, तो कोई तो धनी लोग हैं, कुछ खाने को मिल जाए। तो जैसे ही पूछते तो उसके जो सेवक जो हैं वो आके कहते हैं कि ये तो चंडाल का घर है, अगर चंडाल के हाथ में खाना खाओ तो बताओ। तो बोले भूख तो लगी है, इतने दिनों से लोग तो भाग भगा ही रहे, कोई आसपास आने नहीं देता, कम से कम ये चंडाल का घर है, चलो खा ही लेते। बोला जो भी है। तो फिर जब वो खाना जो अंदर से आता है, जैसे जगन्नाथ जी उसे खाते हैं, उनको पता चल जाता है कि किसके हाथ की रसोई है। और उस दिन फिर जाते हैं, उनको विनती करते हैं कि अब तो तू जो, हम भी वही, तुम्हारे हाथ का खाना तो हम भी खा चुके तो कोई भेदभाव का कोई मायने नहीं रहा, अब चलो घर। देखो उसी तरीके से, जैसी ये कहानी है, ये कहानी का तात्पर्य क्या है, मैं भी वही कहना चाहता हूं कि हम भी शायद बहुत शक्तिशाली अपने आप को मान सकते हैं, जैसे जगन्नाथ हो या बलभद्र हो, लेकिन अगर हम उस लक्ष्मी का ध्यान नहीं रख पाए, अगर लक्ष्मी को वी डोंट गिव दैट रेस्पेक्ट टू दैट, हम भी अलक्ष्मी हो जाते हैं। और उनके पास अष्टवेताल है। जब हम अलक्ष्मी हो जाते हैं तो हमारे अंदर वो विकार उगते हैं, और वो विकार हमसे सब कुछ चुरा ले जाते हैं, सब कुछ। और भटकते भटकते जब तक हम वहां नहीं पहुंचते जहां हमें उन सारे चीजों से मुक्ति मिलती है। So, in this entire travel of our journey, if somehow we have lost all these things also, this is going to be a simple process through which we will regain those things. And how wonderful it would be, like every single day, one process. 5 मिनट का समय है, उतना ही चाहिए आपका, बट वो 5 मिनट आपके 5 मिनट होने चाहिए, किसी और के नहीं। ओके, सो कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, हम बीच में कहाँ ये
लक्ष्मी और जगन्नाथ के बीच में चले गए। चलो अच्छी बात है, उनकी मर्जी। सो जो विजयादशमी की जो हम पूजा करते हैं, सो दिस इज लाइक स्वाइपिंग अवे ऑल द डार्कनेस, अंधकार दूर करने वाली है। एंड देन थिंक ऑफ दिवाली एज lightning of wisdom, prosperity, and divine abundance within our own selves. Just before Diwali, as we polish our homes and the lights and the lamps to welcome Lakshmi Mata, we should also polish our thoughts and light the lamp of knowledge and wisdom to welcome her not only to our houses but also to our souls, हमारे अंदर। सो ये होगी प्रक्रिया, और उसके लिए मैंने एक चार्ट बना दिया है। सो यू डोंट हैव टू वर्क ऑल्सो, आई हैव ऑलरेडी मेड ए डॉक्यूमेंट। उसमें कौन से दिन किस चीज के ऊपर कार्य करना है, ऑन विच डे व्हाट यू हैव टू वर्क, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द सिंपल इंस्ट्रक्शंस ऑन दैट। बट बिफोर इवन गोइंग इनटू दैट प्रोसेस कि कैसे करना है, लेट मी narrate it in such a way, because even though we want to surrender to Ram, हमारे अंदर के जो विकार, जो रावण रूपी विकार है ना, वो हमें जुड़ने नहीं देते उसके साथ। बिकॉज वी ऑफन थिंक दैट रावण वॉज डिस्ट्रॉयड बाय श्री राम इन लंका, बट द ट्रूथ इज रावण स्टिल लिव्स विद इन अस, नॉट इन हिज बॉडी बट इन द फॉर्म ऑफ आवर इनर एनिमीज, हमारे अंतः के विकारों की तरह। हमारे अंदर भी वो सारे चीजें हैं जो रावण में थी। शायद ज्ञान है लेकिन उसका ईगो भी है, शायद धन है लेकिन जेलसी भी है, शायद दिव्यता है लेकिन एरोगेंस भी है। सो इसको मानो ऐसे कहा जा सकता है कि आई कैन टेल इट दिस वे दैट ईगो इज एट वर्क व्हेन वी कैंट एक्सेप्ट समवन एल्स आइडिया। जेलसी in the family, when one relative gets more attention or success, when we feel that jealousy, I think that's also Ravan. But more than that, as it is said, काम क्रोधस्तथा लोभस्तथा मोहस्तथैव च मद माश्चर्य चैतानि व्यक्तत्वा यन्ति परम पदम। जैसे कहा गया है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जो इन सारे चीजों को छोड़ देता है, अबंडनिंग ऑल दीज थिंग्स लीड्स टू द हाईएस्ट स्टेट। उसी तरीके से इफ वी वर्क ऑन रिमूविंग ऑल दोज नेगेटिविटीज फ्रॉम आवर ओन सेल्व्स, Ravana's heads are not just the external things, they are like the 10 fires of ignorance that is burning within us, and each head is like a lens, each head is like a mirror, and it does not allows you to see the reality, it always blocks our vision. Because when our ego is dominant, we see everything as an attack on me. When jealousy rises, it feels like blessings of others also looks like a curse to us. But that is a mind of a very minute person. Although the good thing is you have overcome that, but still something or other keeps on boiling within our own selves. Now just imagine this. एक बार के लिए आंख बंद करो और ये सोचो, if imagine that Ravan is standing in front of you and he does not have any swords in his hands, but he has 10 mirrors. Each mirror will show a distorted image of you. आपका रूप जो सत्य स्वरूप है उसका कुछ अलग ही रूप दिखाएगा उस मिरर में, जैसे कि एंग्री, जेलस, ग्रीडी, एरोगेंस,
अगर ये सारे चीजें आपको दिखा रहा है और आप उसी को देखते जा रहे हो, when you are looking at all those things and you are continuing to look at this, it feels as if that's your truth, that's your reality. But for a moment, bring down the mirrors, and behind those mirrors stands Ram, the true reflection of who you are. When we understand that when the head of Ravan troubles you the most, whether is it your anger or is it the hurt from the loved ones or jealousy or whatever it is, or pride that isolates us, what is that? If you think, what distracts you from this sadhana, what takes you away from this sadhana? So somehow or other we will find that even though I have been continuing on this process, there are certain things that are still attached to me, and there are certain things that I am attached to. How to get rid of all those things is the main journey of today. And then it says, Ramoh Vigrahavan Dharmaha. Means Ram is the very embodiment of Dharma. Because you can open your eyes, because we all know Ram is not just a king of Ayodhya. He is the light of balance within us. Where there is truth, there is Ram. Where there is compassion, there is Ram. And we know, like, the story of detachment that Ram showed. Because when Kaikai demanded कि राम को वनवास जाना पड़ेगा, Ram could have resisted, but he smiled and simply said, Pitru Vachanam Mamas Sirasi. He said, whatever the promise that my father has given, that is of utmost priority to me. And my father's word are more important than my own life. And he walked away from the throne with joy, teaching us that true strength is not in holding on, but in letting go. And when we saw that on Vijayadasami, Ravana was killed, and Ram then started his journey towards Ayodhya, and he reached Ayodhya on the day of Deepavali. So that is how we are trying to create a pathway where your Ram, आपके जो राम है, वो नित्य दिन चलते चलते through every process reach his destination, the state of Ayodhya. So the Ravan can be very powerful. But always remember, there is something more powerful within us, that is Ram. Because the moment Ram will awaken, Ravan will never have a chance. You remember, like, when Dashrath. Oh, I think there is a sound somewhere. Okay. So when Dashrath promised Kaikai, Ram was asked to leave the throne. He did not fight, did not argue, did not claim that, but he just let go of everything. Because his greatness was not in fighting the throne, but letting it go. But can we do that? The question comes, shall we also give away everything? No. The answer is no. But you should realize, if we are talking about Ram, we are also talking about Dashrath. But is the world like Dashrath anymore? But will you do that with anger, with fear, with arrogance? No, there is a way. What should be the way? The way is these 15 days of simple sadhana that we are coming up with. So before even I continue this, please close your eyes.
and look at all the things that you don't like about your own self. क्योंकि हम सब में कुछ ना कुछ ऐसे गुण हैं जो हमें पसंद नहीं है. I don't worry about what people think about us, but what do you think about yourself? और अगर आपके अंदर ऐसा कोई स्थिति है, परिस्थिति है या कोई गुण ऐसे हैं जो स्वयं आपको पसंद नहीं है, then let us think it as if this is one of the qualities of Ravan that is still within us. And in order to bring solution to that, chant with me for some time. Om Sri Ramaya Namah. Om Sri Ramaya Namah. And with each sound of this, may all that you were thinking yourself not to be good with, let this name burn that out. Om Sri Ramaya Namah. Om Sri Ramaya Namah. Om Sri Ramaya Namah. Om Sri Ramaya Namah. Om Shri 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 Ramaya Namah. So now I will tell you like how to prepare for this. जैसे हमारे लिखा हुआ है हमारे पुराणों में, जैसे गाथाएं हैं, उसमें कहा जाता है कि असतो मां सद्गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा amritam gamaya. Means the shloka itself says that lead me from falsehood to truth, from darkness to light, and from death to immortality. So if Dusshera was tamasoma jyotirgamaya, means we burnt down the darkness. Diwali is Jyoti Swarupa Lakshmi. It is like inviting the light back into our lives. And we all know, like when Ram returned to Ayodhya, the people lit lamps not only in the city but in their hearts. Each diya that they lit was not for decoration, but as a promise to themselves that we will never allow Ravana back into our hearts. So, in this 15 days, let us burn one negativity daily and light one lamp of virtue. And by the time Diwali comes, we will not just decorate our homes, we will have decorated our souls for Lakshmi Mata to enter. And I will be sharing this. Let me see if I can. I will try. Share this. Share. So can you see this on the screen now? So this is
just the homework. This is just the outline of what you are going to do. कौन से दिन किस चीज के ऊपर कार्य करना है और कैसे करना है वो बता दूंगा मैं. So this is going to be your chart. And this chart will be posted in the group so that you have a timetable to follow. And those 15 days will have different aspects on which we will be working. I'll try to make it a little bit elaborate, but as of now, you take this. Okay. सरल उपाय से बता दूंगा, but before that, how about doing a meditative process that prepares you for it? So that you not only trying to do that on your own, but a preparatory step as well. ठीक ना? शायद हो सके तो, that's what I will ask Hari bhai, if possible, the meditation that I am going to do now, जो process हम करने वाले हैं, if possible, I will ask either Hari bhai or anybody if you can help to cut down that part. वो part को निकाल देना है. If you can edit it by putting a little bit music on the background, then post it for the group. Absolutely amazing. Or else वैसे भी कहते हैं कि my voice is good enough without music. So it does not matter anyways. So that whatever we are going to guide you through, जो process अभी करने वाला हूँ. So every single day you can use the same meditation so that you don't have to do the work. You are just on the elephant. That's it. So that let it carry you through. So it is like going to be a, this time I am not going to fail you. मतलब ऑप्शन ही नहीं देने वाला हूँ फेल होने का. So the chart is ready, the timetable is created, now the meditation will also be created and both is joined, and all that you have to do is just listen to there and sit. उतना तो कर ही लोगे. What do you call that, Sudha ji? Spoon feeding, हाँ? ठीक है, बच्चे हैं तो स्पून से खिला दो. In whatever way, whichever way, शाम दाम दंड भेद. हमेशा तो दंड दे नहीं सकते. So I thought, like, let's bring that a little bit of happiness into this field, a little bit of mischievousness of the child, जैसे कान्हा जी का नटखटपन होता है. So bring that into play and make this as a divine journey. साधना बड़ी तीव्र दी जा सकती थी, but this is not for that. हाँ, अगर आपको ऐसा लगे कि थोड़ा ज्यादा ही बचपना हो गया है, तो मैं आपको पूछना चाहूंगा, आप बूढ़े कब से हो गए? If you have forgotten how to play, when did you got so old that you have forgotten to play? So there we will begin this journey of this meditation. Because when we start this, let us, कैसे कहते हैं, जैसे लक्ष्मी देवी तो आने ही वाली है, राइट? बट उसके पहले जो मेडिटेशन है उसके लिए तैयार हो जाओ. सो डिम द लाइट्स अगर जानना चाहते हो तो आई गाइड यू कंप्लीटली. अगर सिर्फ अंधेरा करना चाहते हो तो कर लो. So I'll try my best to record it in the best possible way. Very good. So we have a full house of meditators. Right. So बिल्कुल शुरुआत से बता देता हूँ so that it becomes a guideline for all of us while we are doing those 15 days of process as well, okay? Okay. So sit down comfortably with your spine straight, palms resting on your knees.
close your eyes. And as you close your eyes, take 3 deep breaths. Inhaling peace, exhaling tension, inhaling silence, exhaling chaos. Breathe, and with each breath, something good comes within, and with each exhalation, something that is not needed is got out. Now imagine a gentle golden light surrounding you. It is soft, it is warm. It is just like the early morning sun. And now, when you are trying to imagine this, say within your mind, I am ready to release darkness and invite light of the divine into my life. I am ready to release the darkness and invite the divine light within me. As you say this, the next thing that you have to visualize or imagine is a very dark forest. And in the center of this forest, there stands Ravana with his 10 heads. And remember, these 10 heads are not outside, they are our inner negativities: anger, ego, jealousy, greed, attachment, lust, arrogance, hatred, laziness, and envy. One by one, imagine a divine flame, which is your inner Ram, approaching each head. With the first breath, अभी से जो breath लेने वाले हो, with the first breath, burn anger. Feel your tension leaving your shoulders, your chest, and making you feel light. Next, burn the ego. And when you are ready to burn the ego, you feel the humility entering. A calm smile spreading across your heart. And similarly, you can continue with all the heads. See each one melting into smoke, leaving your inner forest clear and bright. And as you burn down on each head, mentally chant within yourself, Om Sri Ramaya Namah. Om Sri Ramaya Namah. Om Sri Ramaya Namah. And now, feel the warmth where tension was. And now, when
The warmth, you know which place it is, and you know where the tension was. Just listen to the soft crackle of fire. Smell the faint fragrance of the incense in your mind. Sense light replacing heaviness. And now you see that Ram appears in a forest, who is shining, absolutely calm and balanced. And his presence absolutely radiates dharma, love, humility, and truth. Now imagine placing a small lamp in your heart. And once that is placed, feel the warmth and light that is expanding. Imagine him placing a lamp in your heart. And now your heart is filled with compassion. And as you are filling yourself up with compassion, fills your chest, patience flows down your arms and cheeks, courage rises your spine, wisdom shines from your mind. Now you can simply say within yourself, Ram is my guide. Ram is my guide. Ram is my light. Rama is my strength. And now you can visualize a heart as a small empty room. It is absolutely small, yet an empty room. Sweep it clean with golden light, removing all the dust and debris of negativity from it. And when all this is done, you could see Sri Lakshmi Mata, who is approaching towards you. As we are removing all the dust and debris, let all the negativity also go away from your heart. And now see Lakshmi approaching, radiant, carrying light and abundance. She will enter a space that is pure, humble, and ready for this. Now you can offer her your inner lamps of virtue: forgiveness, gratitude, generosity, devotion, discipline, ultimately.
truth. And now you should feel her blessings for this entire thing at play. So, what are we going to get out of that is the abundance in your mind, clarity and thought. Abundance of the heart, abundance of the soul. So now again within your mind, chant this mantra. Om Shreem Mahalakshmi Namah. Om Shreem Mahalakshmi Namah. Om Shreem Mahalakshmi Namah. Now feel your body. Feel your body, mind and soul all aligned in the same space. And they are aligned in light and harmony. Now for a moment visualize the outer Diwali lights. Which is reflecting your inner illumination. And as you visualize the outer Diwali lights reflecting your inner illumination, and once you can see the illumination of these lights that are placed within you, this so now, as I said, take 3 diyas and burn them together. Let this diya be a reminder for all of us. And now you can take a deep breath again. And as you take deep breaths, slowly bring the awareness back to the body. As you take the 3 breaths, slowly become aware of your body. As well as once this is done, you can open your eyes slowly, but while carrying the idol today, you must not just do the processes outside. The processes should also be done within with awareness. And once you could visualize all these things, it is time to gently open your eyes and carry the warmth of light open your eyes when you are ready.
Om Shri Ramaya Namaha. Om Shri Ramaya Namaha. Om Shri Ramaya Namaha. Om Shri Ramaya Namaha. So this is just going to be a very small little meditative process which can be of help to you. But the only thing is we have to edit it. We'll try our best to do that. Because when we see that Lakshmi visit to some places and she does not visit to some places. We all know like people clean their houses, polish the doors, lights the lamp to welcome Lakshmi Mata on Diwali. But our scriptures say something else. It says, Shri Sama Basate Nityam Hridaye Sabde Ch Manave. Always. Lakshmi permanently resides only in a pure heart. If Ravana still lives inside, Lakshmi will hesitate to enter. So, all these things that we do is just a cleansing process, just a space of cleaning it up, just a space of allowing the goddess to be appeared into. And the pure heart, may you all be benefited out of it. Because Ravana is darkness, ego, adharma. But Ram is dharma, humility and righteousness. And Lakshmi is the divine prosperity that flows when dharma awakens. You know, when you look at Sheshnag on which Vishnu is lying down, as Vishnu is sleeping, as Vishnu is reclining on the Sheshnag, Lakshmi is sitting at his feet and service. And when Lakshmi sits at the feet in service, one of the students of a Gurukul asked this question to the teacher. In that moment, a disciple once asked, Mata, you are the goddess of wealth, yet you serve why? Then Lakshmi, with a smile, she says, because prosperity can only rest where humility resides. The moment we realize these simple things in our lives, our preparations, our journey is going to be something else. And if we want truly to have Lakshmi in our lives, we must invite her with humility, seva bhav se, and compassion. Take a deep breath and exhale out everything through your mouth. One more. Exhale. One more.
प्रोसेस कैसे करना है वो बता देता हूं। फर्स्ट थिंग इज, ये आप अपने पूजा रूम में कर सकते हो और एनी प्लेस वेयर इट इज क्लीन्ड अप, साफ सुथरा जगह होना चाहिए। और उसके बाद जैसे आप बैठते हो, बैठने के बाद रोज का काम क्या है, यू विल लाइट अप ए दिया एवरी सिंगल डे। अब दिया तेल का हो सकता है, घी का हो सकता है, देर इज नो प्रॉब्लम टू दैट। क्लियर है? यू विल सिट स्पेसिफिकली लुकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। आपका मुख नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही होना है। द मैट दैट यू यूज इज गुड इनफ, मीन्स आपके पास जो मैट है दैट इज गुड इनफ टू गो हेड विथ। रोज एक दिया चाहिए होगा और 5 मिनट का समय है। सो हाउ आर वी गोइंग टू डू एंड व्हाट इज द प्रोसेस? जैसे मैंने बोला कि प्रोसेस बड़ा सिंपल तरीके से बताया जा रहा हूं मैं, so that when you use it, you will see the changes, and at the same time you will see the difference that is happening to you in your life. So क्या करना है, कैसे करना है, ये बता देता हूं। इसको सिंपल वे से अच्छे से समझ जाओ। Every single day you have to burn a diya, then sit there। जैसे आप रोज की पूजा करते हो वो समाप्त कर लो, you complete your daily rituals and puja। After that, sit with the thought of that day, because I have created that Excel sheet in which you will find the names. So every day you will sit with one name. For example, today you have taken anger. Once you have chosen that day that anger is something that I would like to work upon, you will light up the diya, sit in front of it, and think of what makes you angry. And don't spend more than 1 minute on that. We are not here to empower the Ravana, but we are here to empower our own selves, right? So only 1 minute, एक ही क्षण का, एक ही दिन, 1 मिनट का समय लो और ये देखो कि वेयर इज दैट एंगर कमिंग फ्रॉम एंड ऑन whom यू आर एंग्री विथ। ये देखने के बाद डिसाइड दैट, राम का नाम ले लो एंड डिसाइड दैट टुडे आई एम नॉट गोइंग टू लिव लाइक रावण, टुडे आई वांट टू लिव लाइक राम। एंड देन that day, whatever happens, don't get angry. When I said don't get angry, you should feel the forgiveness. आपको क्षमा करना पड़ेगा। And throughout the day, if you can take the name of Ram. So every single day, I have categorized that as anger, ego, greed, jealousy, attachment, lust, arrogance, hatred, laziness, envy, doubt, fear, and impatience, as well as darkness of ignorance या तो अज्ञान। ये सारे के लिए एक एक प्रोसेस। एवरी सिंगल डे सुबह उठोगे, दिया जलाओगे, 1 मिनट के लिए सोचोगे वो विकार आपके अंदर कहाँ है, उसके बाद आपकी साधना शुरू होगी। यू विल चैंट द मंत्रस दैट आई विल शेयर, and at the same time tell to your own self that today I am not going to live with anger, I am going to live with compassion, जो भी दिया गया है टेबल में। Got it? So I'll show you again. I'll let me share that on the screen so that you will easily get an idea of it. Is it visible to everyone? Okay.
So now, as I said, burn one head of Ravan each day, light one diya of Ram each day. तो प्रोसेस क्या है यह देख लो, प्रोसेस भी लिख दिया है, लाइट ए दिया एंड डेडिकेटेड टू द डे ऑफ वर्च्यू। किसके नाम पे दिया जलाओगे? इस तरफ जो चीजें लिखी हुई है। इवनिंग, जब शाम का समय हो या रात का समय हो, राइट डाउन ऑन ए पेपर द नेगेटिविटी ऑफ द डे, एग्जाम्पल एंगर, and after that once you write where you got angry, just tear that paper and throw away or burn it. Then in the night before sleeping, rethink on the throughout the day. Did I let Ravan win today or Ram? Can you do this process? And I will try to make it a little bit elaborate, wherein I will bring in specific mantra for specific days, so that it becomes a completely chanting process, along with helping us to cleanse and clean and bring this space within us to prepare it for the best possible way before Diwali. And now I would like to take few questions, if any, related to this. So that, what would be the date when we start this? अगर आपने देखा होगा इस बार फिर दिवाली लोग कंफ्यूजन में है, 20 तारीख को है, 21 तारीख को है. So when are you celebrating Diwali is the question. Are you celebrating it on 20th or 21st? So most probably कई सारे जगह पे 20 तारीख कहा जा रहा है, बहुत सारी जगह पे 21 तारीख कहा जा रहा है. Again it has come in such a way, the timing has come in such a way that 2 दिन लगता है, और हम हमेशा क्या कहते हैं, हम 2 ही दिन कर लेते हैं, हमको क्या है. But just before that, if you count the 15 days, when are you going to start? कब से कर सकते हो? So anybody good with maths, if you can give us a name or a date so that it's easy for all of us to be there. 6th, if you start from tomorrow, good day to start. सोमवार का दिन है. We have to start tomorrow itself. Let's see like how it goes. उसके बीच में Q&A सेशन तो रहेगा. अगर उसको रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो तब भी आप पूछ सकते हो, अगर अभी कोई प्रोसेस में कोई क्वेश्चन नहीं है तो. So as I said, this is something very little low to what you have done. But we want to make it a simple way, and we want to see who is not losing even a single day in it. अगर प्रश्न ये है कि what if the female is not allowed to sit in the temple and do that, you can do the same thing outside somewhere sitting, because this is working on the inner things, not the outer things. Even if you are traveling, you don't worry, because this is not a particular specific sadhana जहां आपको एक जगह बैठ के करनी है. So why this came into existence is I wanted to create a simple process that you cannot come with any excuses. क्योंकि माला भूल सकते हो, मैट भूल सकते हो, अपने आप को तो नहीं भूलोगे. So wherever, whether you are at home or you are traveling, you will carry yourself anyways. So when you are carrying yourself anyways, what is the need of the next thing? The need is the list. The list is on your phone, and your phone has become another organ in your body. You can live without an organ, but you cannot live without a phone. So the phone by default goes with you. Then what is the need? दिया कैसे जलाएं? How to light up the दिया? ओके, अगर दिया घी बाती खर्चा नहीं करना है तो अपने अंदर दिया जला लो, बैठो उसके साथ. You light up a diya within your own self, as if you have burned something within you, and that is burning within you.
पैसे भी खर्चे नहीं है, और क्या एक्सक्यूज दे सकते हो बताओ? Any excuses left? So that is a fool's proof to make you go through this process without any break. Do that. And most probably I'm thinking of bringing that the Lakshmi sadhana for that 16 weeks. आपको याद है आपने एक लक्ष्मी जी की साधना की थी, दिया जलाते थे for 16 weeks you did that. So let me see like how the dates are falling so that beyond दिवाली के बाद से वो शुरू कर सकते हो। हर फ्राइडे को सुबह 6 बजे से, मतलब सूर्य उगने से जस्ट पहले ही, कुछ नहीं करना है, एक एक दिया बढ़ाते जाना है 16 दिया बनने तक। और you can burn 16 diyas, 16, 16, 16 every time. But the process was to start with 1, 2, 3, 4 and keep on adding to that. I'm not sure like whether you still remember or not what kind of impact it actually brought. It was like a pure form of pulling wealth into your life in the right ways. So would that be good? Anybody says that okay, no, और नहीं बहुत बार कर लिया था, okay, आप मत करो. So that 16 weeks. और उसमें और एक चीज क्या होती है, when you are not able to do that, you have to extend it by 1 week so that the 16s are completed. अगर आप अपने घर पे करते हो तो बहुत अच्छी बात है. So that sadhana is going to come next. But more than that, as we are coming nearer to Diwali, it is not only Lakshmi but also Kali. So next week, let us dedicate something for her then. So let me see what comes out. But for today, the first thing that I'm going to do is share this document with you right away. I'll post it in on the group, or else if anybody can help me, I'll just post it in one group. You please spread it in all the groups. और else हरी भाई अगर आप ही डाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है. So no more questions for this process, right? सिंपल प्रोसेस है. सुबह उठ के पूजा करना है. पूजा के टाइम पे जब दिया जलाते हो, दिया जलाने के बाद ये कहना है कि आज मैं अपने इस विकार के ऊपर कार्य कर रहा हूं. एंड थ्रू आउट द डे डू व्हाट इज मेंशन्ड आउट देयर. उसका रेमेडी जो बताया गया है वो करना है आपको. So do that throughout the day, and in the evening or in the night, just sit for another 5 minutes and see whether you are able to manage it or not. If you are able to manage that, और कहीं पे फिसल गए, मतलब you actually slipped from that place, वो जगह लिखो कि यह जगह में मैं फिसल गया. और उस समय में क्या करना है, राम का नाम लेना है. कितने बार लेना है वो आपके ऊपर है, क्योंकि राम का नाम एक बार काफी है, राम का नाम 2 बार भी काफी है. वो राम का नाम लेने के बाद कहते हो कि आज का जो रावण का ये छोटा सा अंश बच गया था वो आप जला दे. यू बर्न इट डाउन. एंड देन व्हाट डू यू टीयर अप दैट पेपर एंड थ्रो इट अवे. अगर किसी दिन अगर पेपर खाली रह गया तो मीन्स यू आर एबल टू लिव इट थ्रू आउट द डे. व्हाट कुड बी अ बेटर वे? At least the thing that you were carrying for so long, one single day, you never felt that way. और मुझे लगता है कि दैट वुड बी अ ट्रू वे ऑफ नोइंग दैट हाउ इट हैपेंस. बट अगर मेरा रोज पेपर भर रहा है तो मेरे घर की सफाई सही नहीं हुई. डिड आई फेल्ड? डिड आई डिडंट अंडरस्टूड व्हाट वाज टोल्ड? देन आई विल राइट द मंत्र बिलो दैट. यू नो विच मंत्र आई विल राइट. ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णावपूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते.
that should brings the abundance into you, realizing that whether I am able to do it or not, let me be that small little ant walking on the elephant take me where I want, my thing has to go. जब हाथी के ऊपर आप चढ़ जाते हो और हाथी आपको वहां तक लेके चला जाता है, उसे कहते हैं ग्रेस ऑफ द डिवाइन। और सही मायने में उस शब्द का मतलब बनता है कि तू सारे जहां का मालिक है, इतना करम मुझ पे कर दे। कैलाश के तरफ चल ना सकूं तो चलने के तरफ कैलाश कर ले, वेदर आई एम एबल टू वॉक थ्रू दैट पाथ और नॉट, बट लेट मी रीच द डेस्टिनेशन बिकॉज आई एम सरेंडर्ड टू यू। ओके, सो बिल्कुल हल्का फुल्का, मैंने कहा था ना कि बारिश के मौसम में बैठ के पकौड़ी खाने जैसा हाल है। बट विल यू डू दैट इज द क्वेश्चन। प्लीज डू दैट। और जब एक प्रश्न आया है कि कैन बी कंटिन्यू इट बियॉन्ड, तक 16 दिन है, एक विकार और ऐड कर देंगे, या तो जो सबसे ज्यादा परेशान करता है उसको एक दिन एक्स्ट्रा कर लेंगे। आभा जी क्या कहते हो? ठीक, उसके बाद दिवाली के बाद भी करेंगे। ये एक प्रोसेस, ये 15 दिन करके देखते हैं। आई वॉन्ट टू सी द रिजल्ट ऑफ दैट। बेस्ड ऑन दैट एक नई साधना शुरू होगी। ये मानो एंट्रेंस टेस्ट होता है ना, सो ये एंट्रेंस टेस्ट है कि कितनी तैयारी है, रावण को जला पा रहे हो नहीं जला पा रहे हो, कि उसके बाद देन वी विल गो बैक टू द फर्दर इनटू ए डीपर प्रोसेस। एक्चुअली ये तो, लेकिन ये लगता आसान है, जब दिन भर उसको प्रैक्टिस करने लगोगे ना, then you will realize that how powerful it is. You, the day it is, you have to keep silence to the maximum. उस दिन क्या करोगे? अब किससे बात नहीं करे तो घर वाले बोले गए। तो सबसे अच्छा कुछ लोग क्या करते जानते, उस दिन घर पे नहीं रहते, किसी तीर्थ स्थान पे निकल जाते हैं। तो तीर्थ स्थान चले गए तो कोई पूछने का नहीं है, कोई बोलने का नहीं है। So depends on how you are planning. और एल्स टेक स्मॉल व्रत करते हो ना, जैसे कि 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, वेन एवर इट इज पॉसिबल, आई नॉट स्पीक। और उसमें भी हमारे पास बहुत चालाक लोग हैं, वो कहते हैं अच्छा मैं जब सोने जाता हूँ चलेगा, 12 घंटे 8 घंटे तो ऐसे ही हो जाते हैं मेरे मौन। If you want to cheat codes, then you have the cheat codes, we cannot help you with that. Then also I do fasting every day. कल रात से लेके आज सुबह तक मैंने कुछ नहीं खाया, एवरी डे आई एम फास्टिंग फॉर 12 hours. You can say that also. But if you can tell that and you can still connect that with the divine, then शायद it would be like a child offering that small little letter at the feet of the divine. आप ये कह सकते हो, हम तो यही कहते हैं कि देख, तू कहता है कि हम उपवास नहीं करते, देख कल रात के ये समय पे खाए थे, सुबह तक नहीं खाए, बड़ा उपवास हो गया। इतना को अगर एक दिन का पूरा नहीं हो पाया, 2 दिन को एक मान के चल। But these are all the cheat codes that people keep on using to give excuses. लेकिन इतने सरल वाले जो प्रोसेस को अगर एक्सक्यूजेस देना शुरू करेंगे, तो इसके बाद जो प्रोसेस देने वाला हूं तो कर ही नहीं पाओगे, पक्का बोलता हूं। I just given a underrated process to you. I know like आपका स्तर कुछ अलग ही लेवल पे है, लेकिन हमने कहा कि पहले सीढ़ी से फिर शुरू करते हैं। अरे आभा जी कहीं चले गए? हाँ आभा जी, हाथ उठाए थे आपने। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। अरे गुरुजी, मैं ये पूछ रही थी कि वो जो लक्ष्मी वाला प्रोसेस है हर जी 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 शुक्रवार को करना है 16 वीक तक, जी। तो वो आफ्टर दिवाली, वो आफ्टर दिवाली, क्योंकि वो शुरुआत ही दिवाली से होती है। दिवाली से स्टार्ट करना। दिवाली से शुरू होते, कोई उसमें कोई विधि विधान ज्यादा नहीं है, बहुत सरल है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है ना,
वो मैंने You will किया है be उसको amazed. पहले भी आपने कराया था तब मैंने किया है, मैं बट मैं इसीलिए थोड़ी चाहता हूँ कि कंफ्यूज। उसको रिपीट करें, क्योंकि वो योग फिर बन रहा है, लास्ट टाइम नहीं था। तो वही ठीक मैं है। देख रहा हूँ किस दिन करेंगे। वो 20 तारीख हो सकता है, 21 तारीख, किसी दिन एक दिन शुरू कर देंगे। हाँ, So फ्राइडे based जो आ on that, रही you है। can continue for the next 16 weeks. और क्या है, एक दिया ही जलाना है, एक एक्स्ट्रा दिया दूसरे बार, 3 4 5 6 ओके, ऐसे ही बढ़ते जाते हैं, राइट? सो विल गिव इनफ टाइम। अरे ऑलरेडी एक्सपीरियंस लोग हैं, so this time और आसान हो जाएगा। And the other people those who have never done that, if you want to do that, please do that. रिजल्ट तो दिखते हैं उसमें, ओके। ठीक है, एंड ठीक है। स्पेशली हम जानते हैं वो स्पेशली धन के लिए है। तो जिनको सिर्फ और सिर्फ जगत का धन नहीं, उसकी भी कृपा चाहिए, तो क्योंकि मुझे ये लगता है कि आप प्रोसेस कोई भी करो, जैसे शिव ने कहा ना कि उसने पत्थर तो फेंका लेकिन वो पकड़ लेता है। बोले क्यों ना, जब पत्थर फेंका मेरे बारे में सोच के फेंक रहा था। तो वैसे प्रोसेस आप किसी के लिए भी करो, अगर आप धन के लिए भी करो, लेकिन उस देवी या देवता के बारे में सोच के अगर करते हो, क्योंकि ये कहा जाता है कि मैं धन तो मांगूंगा लेकिन भगवान से, क्योंकि सही धन वही दे सकते हैं। एंड दैट्स वेयर आई से आई वी विल लिव इन अबंडेंस, बट वी विल टेक द अबंडेंस थ्रू द ग्रेस ऑफ द डिवाइन, ताकि एक प्रार्थना तन और है गुरु। मन धन ये सारे सही रहे। या आवाजी बताइए। एक प्रार्थना और है कि जी। आप कभी गणपति का बॉक्स भी कराइए। बिल्कुल। क्योंकि मैंने पूजा में सभी को यहाँ किया है प्रोसेस, बट आपने कराया होगा, हो सकता है मैंने तब तक नहीं ज्वाइन ना नहीं किया हो नहीं या जो नहीं भी हो। नहीं आबाजी, तो आप कराइएगा एक बार नहीं करें गणपति का तो भी। गणपति के जो प्रोसेसेस हैं देखते हैं। ओके, ये लक्ष्मी पूजन हो जानी चाहिए। उसके लक्ष्मी के बाद साथ गणेश भी रहते हैं ना। रहते हैं, तो लेकिन आप ये कराइए। तिथि देख के शुरू करेंगे। सो उसमें से भी देखना पड़ेगा कि कौन से गणेश का करना है आपको, या हाँ, पूरे। गणपति का ही करा दीजिए गुरु जी। वहाँ गणपति सबके यहाँ विराजमान। ओके, ठीक। हाँ। नहीं तो पूरे के पूरे 52 गणपतियों का भी अगर करना चाहते तो कर सकते हो। 52 वेज ऑफ वर्शिपिंग गणपति, 52 गणपति स्वरूप ऑफ गणपति। देखते हैं कैसा होता है, बट अगर मैं सीखेंगे भूल ना, गया हम तो धीमे धीमे अब शुरू आप याद करते हैं, दिलाओ, ठीक अगर मैं भूल रहा हूं तो आप मुझे याद दिलाओ, ठीक। सो दिवाली के बाद एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा, उसके बाद ये आप बोलेंगे सो वी आर गोइंग इनटू ए फुल फ्लेजेड साधना। यस आई सेड, बहुत दिन छुट्टी भी तो मना लिए, ओके। बिकॉज हमारा जो ये समय होता है ना, इसे शक्ति साधना का समय माना जाता है। दैट इट स्टार्ट्स विद गणपति पूजन एंड इट गोज अप अंटिल कार्तिक पूजा, जब तक समाप्त नहीं होता वो 3 या 4 महीने बिल्कुल शक्ति की उपासना में लग जाता है। तो इस समय किसी भी तरीके की साधना, किसी भी तरीके की पूजा पाठ बहुत ज्यादा मायने रखती है हमारे लिए। सो तैयार रहिए, बिल्कुल करा देंगे, उसमें क्या है। अगर उनकी मर्जी होगी तो वो खुद ही आएंगे, शायद बहुत सारे लोग उसका इंतजार कर रहे हैं, और कई लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि कोई तो मंत्र दे दो गणपति का। हम बोलते हाँ दे देंगे, अब देखो अब देना ही पड़ेगा लग रहा है, ठीक। सो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। सो विल मीट यू अगेन ऑन वेडनेसडे। तो कल से ही शुरू करो आप ये शीट, ओके। कोशिश करूंगा और थोड़ा कुछ उसमें ऐड कर देने के लिए, बट द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू इज शेयर दैट विथ यू। क्योंकि अगर मैं एक बार, एक्चुअली मैंने एक चीज देखा, एक नोटिस किया हूं मैं। आई टेल दैट आई विल पोस्ट इट इन द ग्रुप, आफ्टर दैट आई एम नॉट पोस्टिंग। somehow I caught hold of myself. I said, तो हमेशा बोलता ही ये पोस्ट करेगा, नहीं कर रहा है। So the first thing that I'm going to do is at least post it in one group so that someone can help me with this. किस ग्रुप में डालूं?
फैमिली में डाल दीजिए महाराज जी, फ्रॉम देयर आई कैन डिस्ट्रीब्यूट। Okay. So Hari bhai, can you please help me with that? यस महाराज। Okay. So कहाँ गया ये documents? 15-day spiritual challenge. Open. हाँ, posted. चलो, I have kept my word. And you can do the same thing. आप ये 15 दिन का चैलेंज अपने लोगों को भी दे दो, बोलो भाई तू ये 15 दिन ये कर। बहुत साधना करना चाहते हो, नहीं हो पाता कहते हो, तो ये बिल्कुल सरल साधना है, ये किसके लिए कुछ समय की जरूरत नहीं है, ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं है, प्रथा नहीं है, विधि नहीं है, तो ये 15 दिन कर ले। इट कैन बी डन बाय किड्स, इट कैन बी डन बाय एनीवन, तो स्प्रेड इट, whomever you can help with this 15 days process, spread it। और कोशिश यही रहेगी, मैं उसको थोड़ा और एलाबरेट करके डे वाइज मंत्र देने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अगर नहीं दिया तो राम का नाम काफी है, ठीक। सो थैंक यू, सो सी यू अगेन। पता है मुझे आज इट्स लाइक द, बोला आज मजा नहीं आया। बोला कैसे आता, जब आप अपने स्तर से नीचे धीरे उतर के आते हो तो कहते हो लेकिन कभी कभी बेसिक्स चाहिए होते हैं हमें। इट्स नॉट ओनली विद द, और अगर तीव्रता की बात करते तो अगले हफ्ते मिलो, फिर बात करते हैं आपसे, फिर देखना पूरा अक्षमाला की माला पिरोएंगे, शिव और काली दोनों को लाएंगे, ठीक है। सो विल मीट यू अगेन, and all the questions Aditi that you are asking, you can ask that in the Q&A sessions anyways. So thank you everyone for being a little childish today and becoming the ant on the elephant. So whichever way it is, घर तो जा रहे हो, okay? So with this assurance and with this prayer and with this blessing, aham brahmasmi tattvamasi, har har Mahadev, बोलो बांके बिहारी लाल